इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार। डे 2 हार्टफुलनेस वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एंड अप्लाइड साइंसेस की ओर से मैं डॉक्टर नेहल शाह आप सबका आज सेशन 2 सत्र 2 में आपका स्वागत करती हूँ। और आज का सत्र शुरू करने से पहले मैं आपको हमारी यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा 360 डिग्री टूर करवाना चाहूँगी। सार्वजनिक यूनिवर्सिटी एक यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, जिसमें 8 अलग-अलग प्रकार की संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जो अप्लाइड साइंसेस, आर्ट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, बिजनेस, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स से जुड़ी हुई हैं। तो आइए एक वीडियो की मदद से हम देखें कि ये यूनिवर्सिटी क्या है। सो थोड़ा आई थिंक टेक्निकल ग्लिच है। Maybe in between I can show you the video. Let's begin the session. Okay. So, shall I start, Nehal ma'am? Dharmesh, we will, I've received a query, but let Nehal ma'am enter and then I'll answer your query. So, Dharmesh, I would like to answer your query by the time we will have Nehal ma'am with us. Uh, it is that we are making a sankalp. Before meditation, we are just making a sankalp that there is divine light in my heart. We don't need to see or imagine anything, neither the light or God, nothing. Good evening, Naresh. Good evening. So it's just a sankalpa. Heartfulness practices are based on these sankalps. So before meditation, we are putting this one sankalpa that there is divine light in my heart and it is pulling me inwards. So you didn't see any light or any color or anything. You just have to remain in that thought of that divine light and then let things unfold. Remain open to whatever is happening and let the things unfold. So, ma'am, before you So just got I actually disconnected. I lost my connection. Can I know where we are? Yeah, what happened is because you were to come back, I started. There was a query from Dharmesh Parmar in the comments. Okay. So I've answered his query by the Okay. time you start, right? Okay, so I think we have, let's not wait for others to join. We can just go on. And I Sure. wanted to show one video related to our university. Maybe I do it at the end of the session. So Sure, let's ma'am. not disturb the session. जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं आज, जिनके लिए पहला दिन है, सिर्फ लता मैडम के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ कि डॉक्टर लता निंगू पेशे से होम्योपैथ हैं और ये क्वांटम हीलर भी हैं और हार्टफुलनेस प्रैक्टिशनर होने के साथ-साथ हार्टफुलनेस ट्रेनर भी हैं। ये करीबन 15 साल से भी ज़्यादा सालों से मेडिटेशन का अभ्यास कर रही हैं।
तो एक एक्सपीरियंस्ड नो मेडिटेटर से अगर आप सेशन लेंगे तो आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज सॉर्ट आउट होंगी। आपको जो भी क्वेरीज हैं आप चेक बॉक्स में डालते रहिएगा, हम उसको हो सके उतना कवर अप करने की कोशिश करेंगे। डे 2 इज ऑल अबाउट डिटॉक्स एंड क्लिनजिंग। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैडम को मैं फ्लोर दे दूंगी कि वो आगे की बात कंटिन्यू करे। लता मैम, प्लीज वेलकम। Thank you. Thank you, and namaste to everyone for this wonderful workshop that Nehal ma'am and the SRKI Institute with Sarvajanik University have arranged for this year-end workshop on heartfulness. So let's continue with the day 2. And Dharmesh, can you send me the reply? Have I answered? Are you satisfied with the answer? Have you got the what I wanted to say about you imagining the light? You needn't imagine the light. It's just a suggestion that we place, and we just remain open to whatever is happening during meditation. That is very important, to just remain open and no need of imagining any light. So, Dharmesh, you are satisfied with the answer? You have understood what needs to be done. So So, can I we'll wait add for this something to answer. this? May I add something to this? Um, I think uh, Not now. Okay. no, no. Okay. All right. So, Yeah. today's workshop is on detox and rejuvenation. So, ma'am, can you please put on the PPT? Next slide, ma'am. So yes, first of all, I would the recap was already started by Dharmesh. I'm very thankful to him that the recap had already started with a query. So can we do a recap? And can the ones who have attended yesterday, can you please tell me what did we do yesterday? How do we do the heartfulness meditation? Can you just put it in the chat box? I think I've already answered it, but if there are any answers, I would know that you are with me and we are in the continuity of yesterday's session. Thanks, Dharmesh, for answering, for replying back. So, yes, recap was, can anybody recap what did we did yesterday? We did about we experienced about heartfulness relaxation, right? And about the meditation, heartfulness meditation. We do it on the heart. The object of meditation is the heart, and the suggestion that we give before starting the meditation is that there is divine light in my heart and it is drawing me inwards. You needn't imagine any light, as I've answered to you just now. You have to just remain open to whatever is happening, witnessing and unfolding. Remain in a observant mode, in a witness mode during the meditation, and just experience how you are feeling. So this is about the recap and heartfulness meditation and relaxation that we did yesterday. So let's start our today's session. And today's session is yes, we learned about what is heartfulness meditation. Thank you, Ayushi. Thank you, Dharmesh. So today's session, next slide, ma'am, is on rejuvenation. What does rejuvenation mean? It is refreshment. How do I become refreshed? All right. This is everything to do with how do we become refreshed? We clean, we wash, right? Externally. We clean and we wash ourselves and we feel so refreshed. We drink water also, and that also makes us so refreshing. Cold water, cold drinks, yeah, fresh juices, right? So here we are talking about is cleaning today that we will do. We will understand what is cleaning and why we need to do it, and by doing cleaning, what we will gain. Next slide, please, ma'am. So let us start with the video, which is
I would request everyone to be very attentive, to listen to the video, understand, and then this will make our process of understanding cleaning very easy. Because today's session is the most important practice of heartfulness, which can immensely help us in our day to day living. Right? So, ma'am, please play the video. Memory. If I say 2 plus 2 and you have learned 2 plus 2 is 4. But if your teacher had spanked you while teaching 2 plus 2, then each time someone asks you 2 plus 2, you'll recall that my teacher spanked me. This becomes emotional memory. You like to see that you don't carry certain impressions at an emotional level. When I have learned something, let's see how to drive. It's my cognitive memory. It remains embedded in my subconscious. But if on my first day of driving I meet with an accident, it will remain embedded as an emotional memory also, and I'll be so afraid of driving thenceforth, unless I get rid of this emotional memory from my mind and heart. But many a time there are situations where we go on absorbing certain level of vibrations. They could be positive also, and they could be negative. Let's see, if you met your girlfriend or a boyfriend for the first time and you had exchanged your first kisses, it will be a memorable place, Cornelius and Fox Street. Suppose this relationship had ended. Each time you visited Fox and Cornelius, what go through your mind? Pain. We carry about things, places, time, togetherness, the partners, situations, all have positive or negative impact. In a family environment, most of the things are in our control. Where there is harmony, there will be togetherness, and together we will reinforce each other's ideas and create a conducive environment for a family to grow together. Whether you want it or not, you will carry those vibrations, you will absorb them. It's like you walk into a coal mine with a white shirt. It's difficult to come out without a black spot on your shirt. For example, if you go to a hospital and you meet your loved ones, when you come out, you feel sad, you feel sorrowful. You go to a church, you come out with a reverential feeling. But if you are forced to go to a church, and if you're a non-believer, to you it could be punishment. So every environment has some kind of impact on us. So old impressions can be utilized for our advantage, or they can become our stumbling block in making a right decision. Best would be to transcend our impressions of the past. Each time, create a new, fresher environment around us. Likewise, memory, recollection, or embedding will be suffering. If I can be freed from emotional memory, I'll have extra energy to preserve the cognitive memory, which is actually helpful in our day to day life. So it's better that we get rid of this emotional baggage. Sooner the better. There are processes in this heartfulness way of meditation. We help people how to get rid of this emotional baggage. There's a special technique which is easy to apply, and within few days of training you can clean this system. It will be a wonderful life, Nancy. Thank you, Nehal, ma'am. So, this is the crux of what we are going to discuss today. It is daily, in our daily lives. We all are human beings. We go through so many of emotions. Okay, it could be positive or it could be negative, right? Ma'am, can I see the slide, larger one? Yeah, thank you so much. Um, so we go through a lot of emotions daily. It could be sadness, depression, loneliness, right? And it could be, next slide, ma'am. It could be being disappointed, being fearful, being very angry. We could have some arguments with our teammates,
right? Or we could be having arguments at our home, right? Being very anxious, so many negative emotions we go through. And many a times, next slide, ma'am, we carry these emotions. What was being said in the video was this emotional memory that we carry along with us. It is not that something which has happened and I have forgotten about it. Many a times these emotions become heavy on our heart, and we have experienced so many times that this remains maybe for months or years together, and still we are unable to unload them, right? We go through emotions of being having lack of confidence, of sadness, of irritation, of guilt of something which I shouldn't have done, right? Or which I should have done, right? The guilt is of both the types, of something which I shouldn't have done at that moment, or something which I should have done at that moment and I did not do it. There are very severe emotional, what to say, qualities that we keep within us, which create a lot of what to say, it just bogs us down, like they can be very heavy. Guilt is a very heavy emotion that is very difficult to get out of our system. We many a times, due to this guilt, we kind of blame ourselves, reproach ourselves that I am like this, I am like that, okay, and do not accept ourselves or do not forgive ourselves. Many a times we don't forgive others, we keep a lot of hatred within us. All right. And with the times that are coming up, we have a lot of competition within us. Even that is not being healthy. Now, how a competition has to be is that it should be a competition within my own self, right? The competition should be with me, not with others. Okay. So, with this competition, with this unhealthy competition, what happens is we try to put down others. All right. We try to put down others and we try to become jealous of the other being growing and I am not growing. So I don't look into my what to say, my abilities where I could improve myself, but I try to become very angry and jealous of what other is possessing, right? So with so many things going on during the entire day, haven't you felt, I'm so sorry for this, haven't you felt times where you have had an argument with someone or you have been very angry and feel so, what to say, so breathless and out of a rage, right? So much of rage comes up and you are unable to unload that. At that moment, what do I do? How do I bring myself down and make myself light? And by doing that, I can not only help myself, but I can help the opposite person as well. Because I, at that moment, become calm and peaceful, I can also reflect that within to the others, right? This is how what we have to learn to become gradually. All this will happen with the practices that we are sharing with you. The one which we did was meditation yesterday, relaxation meditation. Today is a very important day that we are going to discuss is about this rejuvenation. What is this rejuvenation? It is to do everything to do with our emotions, everything to do with our habits, with our tendencies that we have within us. Many a times we have the habit, patients coming to us with obsessive compulsive disorders, right? Kind of wanting, always wanting to wash their hands. There are many other tendencies which we all may be having, right? So how do I get out of this cycle of tendencies, and how I can make myself more calmer and more peaceful. And with this, I can have more clarity of what I need to do. See, what happens is we become very reactive whenever something is not happening according to what I want.
we become very reactive and we react. At that moment, we do not take a pause and understand ki, okay, something has not been right according to what I wanted. And so, how do I respond at that moment? We react back. So, this is how gradually we will go on. Like yesterday, I told you, remaining being aware. So, the more I remain aware of what is happening within me and with my environment, I will keep on constantly correcting and giving signaling to myself. I told you it all becomes effortless as we go on practicing. It is not something which will become like an effortful. It is going to become effortless. Initially, it will be more of conscious. Later on, it will become more of a subconscious activity. Like you drive a car. After you have learned driving, maybe 10 years you are driving, how you drive, it becomes very easier. It is very effortless. This is how it will become, and we will start changing. And this is how, from thinking to feeling to becoming, this will be our journey. Next slide, please, ma'am. How does cleaning activity help us? The cleaning activity, how it help us, like I told you, with the cleaning of the physical body, we start cleaning our body with the bathing. Now there is something which about this emotional baggage that we have. How do I clean this? How this activity is going to help us? It is going to help by removing all these baggages. See, suppose I hold a glass. All right, I hold a glass of maybe an empty glass of water like this, maybe for 1 hour. Okay. And I can continue. If I continue doing holding this glass for maybe 5 hours or 10 hours, what is going to happen? The What is going to happen if I keep holding on the empty glass like this for maybe 10 hours? Can you please put it in the chat? What will happen? For 10 hours, for 1 hour, for 1 day, for 24 hours, what will happen to the hand? It will become so painful. Within an hour, it will become so painful. And if I do it for 24 hours, this hand will become absolutely numb. And maybe I'm not able to use the hand at all. Right? This is an example that I wanted to give. So, what happens when we keep all these emotion baggage within us? See, we all are born a with a package, right? With a package of sanskars. We all are born with our package of sanskars, and we lead our life according to that. During the lifetime, we make more sanskars, okay, and that affect our past sanskars. And in the video also, there was a mentioning of impressions. These emotional impressions constantly being hammering on our consciousness become sanskar. They become hard. All right. And then we act according to what has already happened, according to the past, according to the feeling that we have had in the past. And so I am more prone to becoming and doing that thing. Like if I am more prone to becoming irritated and impatient, that habit will become more and more stronger of becoming impatient and irritated. Right? Now, how do I break this? All right, break this cycle. How do I break this cycle? Whatever sanskars that I have been born with, I have to clear that. Whatever I am creating today, whatever is happening today, whatever has made me very unstable, how do I make that undo? Mainly is undoing and letting go and becoming refreshed. All right. So, this is how the activity will help us to unload, to remove all the clutters that we gather inside us. All right. Whatever is happening inside us will reflect outside. All right. All the what to say impurities if that we are having,
all the tensions that we are having inside us, all the anxiety that we may have inside us will be reflected out whenever we are whenever there is a small trigger comes up and we would flare up. It could be a fear, it could be a fright, it could be anxiety, it could be anger. All right, something small will trigger us into that. So how do I become more stable, balanced, poised? All right, this is how the cleaning activity will help us. Next slide, ma'am. It is like, like I spoke about all the sanskars that are surrounding us, that are there within us. It's like this lamp, it's like the lamp, the suit, जो सूट बन गया है, लैंप देख रहे हैं, वो जो कालास बन गई है, उस कालास को कैसे निकाला जाए, ये क्लीनिंग की पद्धति, जो अंदर जो कालास हमारी जो संस्कार और जो इम्प्रेशंस हम क्रिएट करते हैं, इट्स सिंपल, लाइक हमारे क्लास में कोई एंटर करता है तो हम ये आइडिया देते हैं, ओ माय गॉड, ये इसने क्या पहना हुआ है, ये ऐसे कैसे लग रहे हैं, अरे उसने ऐसा क्या कर दिया. तो एवरी थिंग that we are doing, that we are thinking, could be creating an impression within us. And if that goes on repetitive होते जाता है, तो वो हो जाता है ठोस संस्कार. तो उस चीज को कैसे क्लीन अप किया जाए, इट्स बेस्ट एग्जांपल इज दिस लैम्प. जो संस्कार, जो हमारे जो इम्प्रेशंस हमारे बनते जाते हैं इमोशन मेमोरी की वजह से, वो उसको सूट बन जाता है, जो कालास बन जाती है, उसको क्लीन अप करना है, right? And the soul which is there, the divine light which is already there within us, starts shining up, and that will be reflected in our day-to-day activities within ourselves, and others will also experience this, right? Next slide please, ma'am. Yes, see, now this is a beautiful example where जहाँ पे थोड़ा सा पानी है पर गंदा है, right? देखते जाते हैं, जो हम पानी डालते जा रहे हैं वो पानी प्योर होते जाएगा, और जो इम्प्योरिटी है वो निकलते जाएगी, छलकती जाएगी. ओके, लास्ट बॉटल ग्लास में कैसा है, सब कुछ छलक गया है, जो इम्प्योरिटी है वो तो सब कुछ निकल गई है, और जो पानी आ रहा है, वो प्योर पानी आ रहा है, वो पूरे ग्लास को अब प्योरिटी से भर दिया है. So positivity से भर दिया है. So whatever negative is there just gets out of our system, gets out and out. This will require a lot of practice, okay? And but you will start feeling the difference the day you do it properly. You will start feeling the difference, the lightness that we need to feel. Okay, that I was talking about, the emotional baggage, the heaviness that we feel, वो हैवीनेस बिल्कुल निकल जाएगी. वो जो मेरे अंदर जो उस पर्सन के लिए जो नेगेटिविटी थी, ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, वो पूरी नेगेटिविटी पूरी पिघल सी गई. नथिंग इज रिमेनिंग नेगेटिव. If at all I have any negative emotion for somebody, that just clears off, and I become so pure and full of love. So this is how, by doing the practice, we will gain. Next slide, please, ma'am. So let us understand a little bit more about this emotional emotions by a video by Joshua Pollock, right? So I would again request everyone to remain attentive to what is being said, and we will discuss that again. Please, ma'am. Everyone wants to live fully in the present. This is an ongoing mantra that we hear everywhere. Be in the moment, seize the day, live for right now. But very few people know what this means or how to actually implement it. We are continuously reacting to our environments. Someone cuts us off in traffic, we get angry. Someone laughs at us, and we feel embarrassed. Someone breaks our heart, we find ourselves plummeted into a season of despair. These reactions feel visceral, impossible to dodge or avoid. And there is a reason for this. Most of our emotional reactions have deep roots in the past. They're part of an emotional pattern that has been deepened over time. It gets strengthened when we repeatedly entertain an emotion.
when we repeatedly react in the same old way. Every time I react with anger, I become more likely to choose anger as a first response. That anger is always just under the surface, just waiting to come out. With every emotional reaction that we have, we deepen that same underlying emotional trend. Emotion is kind of like water. When water flows over the same ground, it slowly carves out a channel for itself. And eventually, it becomes a rushing river. As the riverbed becomes wider, the currents become stronger. When we react with anger or pain or shame over and over again, the more anger or pain or shame we draw into our lives, the currents become stronger. With every reaction, we're actually creating a blueprint for the future. We're creating a precedent or a template for how we're going to think or feel or behave the next time. And then, in the future, some external situation will come along and re-trigger that emotion yet again. If there was no anger already inside me, being cut off in traffic wouldn't frustrate me. If there wasn't any insecurity already ingrained in my psyche, then being laughed at wouldn't ruin my day. If there was no discomfort associated with being alone, then being single wouldn't feel like such an unconquerable inconvenience. We will never have full control over the circumstances in our lives, but we can learn to regulate our inner state so that our external circumstances don't have control over us. To do this, we need to address those deep impulses that orchestrate our emotional reactions. In fact, these impulses, which have their roots in the past, can actually be cleaned away through certain practices. But even if you adopt such a practice, that cleaning will still be a gradual process. In the meantime, we can also learn to become non-reactive to those deep impulses. By tuning into the heart and remaining connected inside, we become capable of choosing a different response, of choosing joy or even gratitude. And the more we learn to live from the heart, the more we realize that we do in fact have a choice. We can choose to react according to the same old patterns, or we can choose to respond with the heart instead and become free from those burdens of the past. With every reflexive reaction that we have, we give up our free will a little bit and allow ourselves to be controlled by our tendencies instead. With every heartful response, we become free. The more we use our hearts in our lives, the less impact our circumstances have on us, and the more freedom we gain. Hello, ma'am. There are two very important things here I would like to say, add on is by living by our heart. We have to live by our heart, and we have to remove these emotional baggages. The root cause which is there in the past. It could be our past lives, right? Everyone, I think most of everyone of our religion says that we are being born because of our sanskars. We have been born at a particular place as a particular being, right, of what we have been in the past lives, right? Based on that, we have made today, and based on today we will make our tomorrow. So, how am I going to clear off all these baggages within me and become more and more lighter and lighter, more and more satisfied and contented and full of courage? Full of courage. Next slide, please, ma'am. The purpose of cleaning is to remove all these patterns of thinking, of this emotional reactivity that we keep on having, that we keep on doing, and the behavioral tendencies that we have. It completely clears our perception. Science today, I would request everyone to read Biology of Belief. There, they earlier we used to we give so much importance to genes. Genes were the one who genes were the one who used to track everything, and everything is depending on our genes. Okay, that was the governing body, but not anymore. Our thoughts, our beliefs, and our perception acts upon the genes, and it gets triggered. All right.
See, there are four children, four brothers, sisters of one of two pair of the parents. All right, of a parent, there are four children, but only one child develops diabetes. Why? Because he or she went through such circumstances, made those emotional conflicts, had those emotional conflicts within that, within him or her, made those perceptions, and that is why that gene got triggered. The genes have no more much of importance. It is our perception. There is a glass of water, it is half full and half empty. Okay, the person who says it is half full, I will, it is enough for me, and somebody will say grumblingly कि ये तो आधा empty है, इतने से क्या होगा. So तो इसी के ऊपर हमारा पूरा लाइफ चलता है. It is upon the perception. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, अ लवर है, सपोज अ लवर है, बहुत डीपली इन लव विथ हर, विथ हिज गर्लफ्रेंड, एंड ही वॉन्ट्स टू मीट हिज गर्लफ्रेंड कम वॉट में. सो ही वॉन्ट्स टू मीट हर एट नाइट, ही जस्ट हैज टू मीट हर. तो वहाँ पे क्या रिवर है, थोड़ा सा रिवर है, उसको वो रिवर को क्रॉस करना है. तो वो रिवर को क्रॉस करता है, वो वहाँ पे देखता है एक लॉग है, वो सोचता है कि वो तो वुड है, चलो इसके ऊपर बैठ के मैं रिवर क्रॉस कर देता हूँ. सो ही क्रॉसेस द रिवर्स एंड ही गोज टू हिज गर्लफ्रेंड, टू मीट हिज गर्लफ्रेंड. इन द वे ही सीज दैट वो तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे है, तो वहाँ पे एक रोप दिखता है, तो वो रोप से ऊपर चढ़ के चला जाता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने. ठीक है, तो वो देखती है कि ओ माय गॉड, तुम इस टाइम पे तुम मुझसे मिलने आए हो, हाउ डिड यू कम थ्रू, इतने पिच डार्कनेस है नाइट में. सो ही वाज मैडली इन लव विथ हर, राइट. इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग थोड़ा डे लाइट होने लगता है, डॉन होने लगा, और फिर जब वो रिटर्न हो रहा है, तो तब ही सीज कि ओ माय गॉड, जो रस्सी में समझ रहा था वो तो स्नेक था, और वो जो रिवर में वो जा रहा है, अभी घर को जा रहा है, वो रिवर में जो वो उसने लॉग के ऊपर उसने सोचा वो वुड है, वो उसने सोचा वुड है, और उसके ऊपर बैठ के आया, वो तो उसने देखा वो तो एक डेड बॉडी थी. तो व्हाट हैपेंड, इट वाज द परसेप्शन. एट दैट मोमेंट ही फेल्ट दिस वाज अ वुड एंड ही क्लाइम्ड ऑन इट एंड ही क्रॉस्ड, एंड वो रस्सी समझ के वो गया. सो थ्रू क्लीनिंग, बाय डूइंग आवर क्लीनिंग, आवर जो भी हमारे जो अंदर जो गलत चीज़ें बैठी हुई हैं वो सारी क्लियर अप होने लगती हैं. हमारे परसेप्शंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने लगते हैं. हमारा कॉन्शियसनेस एक्सपांड होने लगता है. जो yesterday मैंने कहा था, अवेयरनेस मीन्स कॉन्शियसनेस, दैट स्टार्ट्स एक्सपांडिंग, एंड वी सी थिंग्स एज इट इज. हमारा कोई ओवर रिएक्शन नहीं होगा सिचुएशन के ऊपर. वी विल रिएक्ट इन अ वेरी विजडम विथ लॉट ऑफ वाइजनेस इन अस. ओके, विवेक से हम उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम. So it removes all our negative tendencies, all our compulsive behaviors, our beliefs जो negative हैं, habits जो हैं, पूरे root cause से वो जाके वो निकालता है. And after doing this cleaning, we become absolutely simple, positive and pure. Next slide please. This is how, by doing the meditation and by doing this rejuvenation, we build our own destiny. We can make our own selves. We needn't be that nervous person that we have always been. जरूरी नहीं है. हम इस संस्कार को पूरा क्लियर आउट करते जाएंगे, एंड आई विल बिकम मोर एंड मोर confident and with lot of clarity of the decisions of what I need to do, and the right perception of whatever situation is there near me. So we build our own destiny by doing these practices. Next slide please ma'am. So in heartfulness, we have these different techniques, detox techniques: anger detox, fear detox, anxiety detox, stress detox, and sensual desire detox, right?
Nowadays, we find more and more youth, not only youth, but even elders, seeing pornography, being involved in pornography, right? That is creating so much of negativity in us. So, how do I remove that too? We have methods and techniques for removing and detoxing that sensual desires too. So, next slide, ma'am. So, how do we do this cleaning technique? Okay. The cleaning technique is very simple. We do it in the day end. Okay. We do it in the day end when our majority of our day is over, like doing it in the sun during the sunset, like around the sunset, around 5 o'clock, 6 o'clock, or 7 o'clock, when you have finished your majority of your work, when you have come back home from your work, you can do this technique, because we have gathered a lot of emotions during the day. So let us just become refreshed and rejuvenated. So this is done in the evening, and this is done for half an hour. The technique that we do is we bring our attention on our back. हमारे पीठ के ऊपर हम attention ले आते हैं, सर के ऊपर से लेके करोड़रज्जु तक, टेल बोन तक हम उसको इमेजिन करते हैं, और वहाँ से हम ये इमेजिन करते हैं कि सभी जटिलताएं और सभी अशुद्धियाँ, all the complexities and all the impurities are leaving from my entire back. मेरे पूरे पीठ से ये सभी जटिलताएं और सभी अशुद्धियां धुओं के रूप में निकलती जा रही है. यहाँ पे हम इमेजिन करेंगे कि धुएं निकलते जा रहे हैं. ओके, पूरी पीठ से. कोई पर्टिकुलर इमोशन को हम निकालेंगे नहीं कि मेरे अंदर बहुत गुस्सा है या मेरे अंदर बहुत जेलसी है, ऐसे पर्टिकुलरली नथिंग. We will say everything is going out, like all the complexities and all the impurities are leaving from my back in the form of fumes. इस संकल्प को हम 20 मिनट के लिए करते हैं, for 20 minutes. All right, we keep on doing this, putting our attention on the back and keep on removing everything from back in the form of fumes. In the next 10 minutes, we will bring our attention to the front. हम अपना attention आगे की ओर ले आएंगे. आगे से हम ये संकल्प देंगे कि दिव्य प्रकाश मेरे हृदय में प्रवेश कर रहा है, और मेरे हृदय से होके मेरे हर एक शरीर के हर एक सेल में, हर एक कण कण में ये दिव्य प्रकाश अब फैलते जा रहा है. मैं पूरी तरह से इस दिव्य प्रकाश से ओतप्रोत हो रही हूँ. My entire body is filled with this divine current. All right? ये हम 10 मिनट के लिए इस डिवाइन करंट को एंट्री करते हैं और पूरे शरीर में फैलने देते हैं. At the end of the 10 minutes, you will start feeling very light. Okay? At that moment, we give this sankalpa. Now, I'm completely pure and simple. सभी जटिलताएं निकल गई, मतलब मैं बिल्कुल निर्मल और सरल हो गई. सभी impurities, अशुद्धियां निकल गई, मतलब मैं पूरी तरह से शुद्ध हो गई. Right? There are two things. Impurities and complexities, जटिलताएं और अशुद्धियां, इन सब को हम निकालते हैं, और पद्धति हो जाने के बाद हम पूरा लाइटनेस महसूस करते हैं. तब हम पूरी तरह से सरल, निर्मल और शुद्ध बन गए हैं. I am now completely crystal clear. With this sankalpa, we complete the technique of cleaning. All right. So, this is how we will do today. Cleaning हम करेंगे, इसको एक्सपीरियंस करेंगे, और इसको हम मर्ज करेंगे मेडिटेशन के साथ. तो आई विल गिव फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस. मैं क्लीनिंग की इंस्ट्रक्शंस दूंगी. हम एक छोटा सा वीडियो भी अभी देख लेंगे, उसको और अच्छी तरह समझने के लिए, और अच्छी तरह आप इसको समझेंगे, रिपीट होगा. फिर हम वर्बली आपको गाइडेड क्लीनिंग कराएंगे,
और क्लीनिंग करते करते हम फिर से हृदय पर आएंगे और उसको मेडिटेशन के साथ मर्ज कर लेंगे आज के दिन। आप वैसे इसको आधा घंटा सिर्फ क्लीनिंग करना है, पीछे से धुआं निकालने हैं, आगे से दिव्य प्रकाश को प्रवेश करना है फॉर हाफ एन आवर। फॉर स्टार्टिंग यू कैन डू इट फॉर मे बी 15 मिनट्स। अब 15 मिनट से इसे शुरू करें, 10 मिनट के लिए धुआं को निकालें और 5 मिनट में हृदय में दिव्य प्रकाश को प्रवेश करें। ओके, अगेन यू विल सिट इन अ वेरी कंफर्टेबल पोस्चर, जहाँ पे भी घर में आपको लगता है कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वहाँ पे आप बैठेंगे और इस पद्धति को करेंगे शाम को। खाना खाने से पहले इस चीज़ को किया जाता है, क्योंकि खाना खाने के बाद हम बहुत ही ड्राउजी महसूस करते हैं और इस क्लीनिंग में हमें पूरी विल पावर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। अब मेडिटेशन में क्या करते हैं, हम जस्ट अपना अटेंशन हृदय पे रखते हैं, दिव्य प्रकाश है हमारे हृदय में, और हम फिर लेट गो हो जाते हैं, मतलब लेट इट हैपन, जो हो रहा है उसे होने देना होता है। क्लीनिंग में हम क्या करते हैं, क्लीनिंग में हम पूरे अलर्टनेस के साथ और पूरे एक्टिव विल पावर के साथ इसको करते हैं। सो मेडिटेशन इज लाइक अ पैसिव प्रोसेस, cleaning is a very active process where we require our willpower. All right. जैसे कि झाड़ू लगाते हैं, हम झाड़ू कैसे लगाते हैं, झाड़ू लगाते वक्त हमारा हैंड मूवमेंट होता है, झाड़ू लगता है, ऐसे नहीं होता कि हम ऊपर ऊपर इसे करते हैं, राइट, वी अप्लाई, राइट। वैसे ही हमारा विल पावर अप्लाई करते हुए हम पूरे धुओं को पीछे से निकालेंगे। All right. So this is a very simple process, but an extremely important practice in heartfulness, which helps us immensely. हमारे जो पैटर्न्स हम अब ईच वन ऑफ अस में हैव एक्सपीरियंस्ड, हम सबको अलग अलग पैटर्न हो सकता है, राइट। तो उस पैटर्न को कैसे इरेज करें, ऑलराइट, एंड वी बिकम अ न्यू, right, we renew ourselves. So next slide, ma'am, we will play the video right now. All right, please play the video of cleaning technique. सफाई दिन के अंत में सभी कार्यों की समाप्ति के पश्चात शाम को की जाती है। इसमें आप मानसिक रूप से अपने भीतर की जटिलताओं और अशुद्धियों को साफ करते हैं। आराम से बैठ जाएं और हल्के से अपनी आंखें बंद कर लें। अपना ध्यान पीठ की ओर ले जाएं। सिर के ऊपर से लेकर नीचे रीढ़ की निचली हड्डी तक कल्पना करें कि सभी जटिलताएं और अशुद्धियां धुएं के रूप में पूरे शारीरिक संरचना से बाहर निकल रही हैं। यह धुआं पूरे पीठ से तेजी से बाहर निकल रहा है। किसी भी ऐसी घटना या ऐसी चीज के बारे में न सोचें जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। बस सब कुछ निकल जाने दें। धीरे से पूरे भरोसे और आत्मविश्वास के साथ सफाई की प्रक्रिया में तेजी लाएं। आवश्यकता अनुसार अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करें। इस प्रक्रिया को लगभग 20 मिनट तक करते रहें। जैसे जैसे जटिलताएं और अशुद्धियां बाहर निकलती जाती हैं, आप हृदय में हल्कापन महसूस करते जाते हैं, जिससे शून्यता बनती जाती है। एक पवित्र धारा दिव्य स्रोत से आपके हृदय में उतरकर उस शून्यता को भरती जा रही है। यह पवित्र धारा जटिलताओं और अशुद्धियों को हटाने में आपकी मदद कर रही है।
जटिलताएं और अशुद्धियां जब निकल जाती हैं, आप सहजता और पवित्रता की अनुभूति करने लगते हैं। यह पवित्र धारा हर कोशिका में और शरीर के हर एक कोने में प्रवेश करती जा रही है। आपका संपूर्ण शरीर पूरी तरह से शुद्धता को महसूस कर रहा है और वह अब पूरी तरह पवित्र हो गया है। Thank you, ma'am. Here I would like to remind everyone that शाम को हम ये चीज़ करते हैं, बट सपोज सवेरे आपका किसी के साथ अनबन हो गई, बहुत विचलित हो गए हैं आप, तो तभी तुरंत 5 मिनट के लिए ये चीज़ ज़रूर करें। 5 मिनट के लिए क्लीनिंग, तभी बहुत विचलित हो गए हैं आप, समथिंग रियली बैड हैज़ हैपेंड और सम वेरी बिग आर्ग्यूमेंट और फाइट हैज़ हैपेंड, या आप किसी बात को लेके बहुत डर गए हैं, तो तुरंत तभी 5 मिनट के लिए इस क्लीनिंग प्रक्रिया को करें। शाम को तो हमें करना ही है। इट इज़ लाइक मैं सफ़ेद मैंने ये टी शर्ट पहना हुआ है और मैंने समोसा खा रही हूँ टोमेटो सॉस के साथ। टोमेटो सॉस सडनली गिर गया, तो क्या मैं शाम तक वेट करूँगी या कल तक वेट करूँगी कि तभी तो साफ़ होना ही है? मैं क्या करूँगी, पानी लेके पहले उसको थोड़ा-सा क्लीन अप कर लूँगी, ताकि नेक्स्ट जब मैं धोऊँगी तो भी पूरी तरह से क्लीन अप हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हाई जब भी आप दिन भर में कभी ऐसी इमोशनल सिचुएशन से गुज़रते हैं, तो तुरंत 5 मिनट के लिए क्लीनिंग ज़रूर कर दें। खड़े-खड़े भी हो सकता है, तो खड़े-खड़े होके आँखें खुला रह के भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं, करें। तभी आपको महसूस होगा आप कितने लाइट हो गए, और पूरे दिन भर आप उसको लेके नहीं चलेंगे, वो बैगेज लेके नहीं चलेंगे। यू विल बी फ्रेश एंड बैक टू योर वर्क। Okay, so remember to do that as well. All right, and so now next slide, ma'am. Now is a slide for experience. Now we will do the heartfulness cleaning, right? So what we will do is, please every one of you, all those who are participating, आप अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट कर दें और एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें और एक कंफर्टेबल प्लेस पे चले जाएं जहाँ पे आप कोई डिस्टर्ब ना करे आपको, because this is very important for you to experience and feel the cleaning. So I would give you few minutes to all of you, 2 minutes to all of you, to please go and make yourself settle करें अपने आप को ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। फैमिली मेम्बर्स को भी बोल दें कि 10-15 मिनट के लिए आपको डिस्टर्ब ना करे, रूम में चले जाएं। कंफर्टेबल पोस्चर में बैठना होगा आपको, आंख बंद करके बैठना होगा और मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिएगा। जो अभी वीडियो हमने देखा वही इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दूंगी। क्लीनिंग की पद्धति के बाद मैं ये कहूँगी कि अब हम पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र बन गए हैं। उसके बाद मैं इसको मेडिटेशन के साथ मर्ज करूँगी। जब हम ध्यान करना शुरू करेंगे, मैं ये संकल्प आप सबको दूंगी कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है, ठीक है? और फिर हम उसी में ध्यान करने लगेंगे। और जब मैं दैट्स ऑल बोलूँगी, तब आप सबसे निवेदन है, आप अपनी आंतरिक स्थिति को फील करना। एट द एंड ऑफ द क्लीनिंग एंड मेडिटेशन, प्लीज ऑब्जर्व योर सेल्फ, हाउ एम आई फीलिंग। अपने आप को थोड़े से मिनट्स देना, फिर अपनी आंखें खोलना और इस चीज़ को अपनी डायरी में नोट कर देना ज़रूरी है। ओके, सो लेट अस नाउ बिगिन द एक्सपीरियंशियल सेशन. Everyone is requested to please close your eyes. And gently and softly bring your attention to your back.
अपना अटेंशन अपनी पीठ की ओर ले आइए। अपनी पूरी पीठ को इमेजिन करें, सर के शिखर से लेके करोड़रज्जु तक, लास्ट बोन, टेल बोन तक। अब हम ये संकल्प देंगे कि सभी जटिलताएं और सभी अशुद्धियां मेरे संपूर्ण संरचना से, पीठ की ओर से धुओं के रूप में निकलती जा रही है। अपनी पूरी पीठ से धुओं को निकलते हुए देखें, इमेजिन करें और महसूस करें कि मेरी पूरी पीठ से सभी जटिलताएं और सभी अशुद्धियां निकलती जा रही है। इस प्रक्रिया को जारी रखें। धीरे से हम इस प्रक्रिया को वेग देंगे, स्पीड देंगे। महसूस करें कि अब बड़ी तेजी से धुएं निकलते जा रहे हैं। मेरी पूरी पीठ से बहुत सारे धुएं निकलते जा रहे हैं। माथे के पिछले भाग से, गर्दन से, पीठ से, कमर से, करोड़रज्जु तक, टेल बोन तक, संपूर्ण पीठ से बहुत सारे धुएं निकलते जा रहे हैं। अपनी इच्छा शक्ति का संपूर्ण उपयोग करें और सब कुछ निकल जाने दें। इस प्रक्रिया को कंटिन्यू रखें, धुओं को निकलते जाने दें। धीरे से अपना ध्यान आगे की ओर ले आएं। महसूस करें दिव्य धारा
आगे से सोत्र से मेरे हृदय में आ रही है। Divine current from the source is entering my heart from the front. This divine current from my heart is now spreading to my each and every cell of my body. ये दिव्य धारा मेरे हृदय से होके मेरे शरीर के हर एक कण कण में, हर एक कोशिकाओं से गुजरते हुए मेरे शरीर के सभी भाग में ये दिव्य धारा अब फैल गई है। Now I feel completely pure and simple. अब मैं पूरी तरह से सरल, निर्मल और पवित्र बन गई हूँ। धीरे से अपना ध्यान हृदय की ओर ले आएं। हृदय पर ये हम एक संकल्प देंगे कि दिव्य प्रकाश मेरे हृदय में मौजूद है और वह मुझे भीतर की ओर खींच रहा है। इस दिव्य प्रकाश को देखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये एक आइडिया दे रहे हैं कि हृदय में ये मौजूद है। And just remain absorbed in your heart. Please start meditation on the heart.
That's all. अपनी आंतरिक कंडीशन को महसूस करें। फिर धीरे से अपनी आंखें खोलें। So, as this is an experiential session, I would like to have your comments, your feeling. How did you feel while doing the cleaning? And while doing the cleaning and after this meditation session, how are you feeling? Can I have your comments, please? Jai Solanki, Dharmesh, Hiral, Helena. Can I have your feedbacks, please? Or if there are any queries, anything, any Ma'am, they are comments? writing. They are writing. All right. Ayushi is commenting positiveness. Ishika is commenting feeling good. Yeah, yeah. Got it. Now I'm getting. Meaning Mini pause pause. in thinking process. Yeah. Mini pause. All right. Positiveness. Can somebody particularly tell me how did you feel while doing the cleaning? While we were doing the cleaning, can somebody please give me the comment, give me the feedback? Are there any queries, any questions? If there is no comment, can we have any queries for today's session? Because today's session is the most important session. Because day in, day out, we go through a lot of turmoil within us, and how I can free myself from them. You may ask questions, yes, you may give your queries. Whole body will energetic and vibration is produced, that I feel. Okay, Ayushi, thank you. You feel a lot of vibrations and energy. Okay, thanks. Uh, this is something in Gujarati, Nehal ma'am. Can you please help me? हाँ. So it is ઊંઘ આવી like જાય એવું ઊંઘ લાગે. આવી જાય. ઊંઘ આવી So he જાય એવું felt લાગે. sleepy. He felt sleepy. हाँ. That could be And during the meditation. But I want to know, Dharmesh, how did you feel while doing the cleaning? Where during cleaning I had said ki you have to remain alert. It is an active process and you have to apply your willpower. So that is why I'm asking again. How many of you, yeah, what did you feel while doing the cleaning? While I was giving you the instructions to do the cleaning, how did you feel? so in between, Jai Solanki is writing, it requires practice to fully experience the benefits of this technique. Obviously, yes, absolutely. But in the first day itself, there are many who do feel, but doesn't matter. It does require practice. Absolutely, I agree with my own experience. Where cleaning, I had to really do it for months together. Where actually मुझे पता चला कि ऐसा करना है. हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो
पहले तो हम 4 पहिए साइकिल से सीखते हैं, है कि नहीं? बचपन में हमने 4 पहिए की साइकिल लगा के सीखा साइकिल कैसे चलाना है। फिर हम 2 पहिए की साइकिल चलाने लगे, फिर हम बाइक चलाने लगे, फिर हम स्कूटी चलाने लगे, राइट राइट। सो देन वी स्टार्टेड डूइंग दी कार भी चलाने लगे। या देयर इज अ क्वेश्चन, was there anyone who had to stop and could not go further? ऐसा कहीं पे किसी को हुआ? किसी को ऐसा लगा कि बस अभी नहीं आगे जा सकते? जैसे कल So मैंने कहा था। I have a question, ma'am, because यस many a मैम। times, we people are under so much pressure, या stress, and the emotions are overwhelming. So you are यस carried away by the anger, or maybe you are carried away by some pain or some kind of an emotion. So then, at that moment, as you told, for 5 minutes you should do this particular technique, but या like it is such an overwhelming state. How do we manage to do the technique? You're not in your control, then how it is possible to do this technique? that is why I am not in my control. That is why I have to disconnect. I have to disconnect and do this practice. एक बार आप ये करेंगे फिर आपको डिस्कनेक्ट करना इजी हो जाएगा, बिकॉज दिस इज वेयर यू विल बिकम मोर एंड मोर, क्या कहेंगे, अगेन मैं अवेयरनेस पे आ रही हूँ, मोर एंड मोर अवेयर। एंड जैसे मैंने डिस्कनेक्ट करा कि अभी मुझे पता चल ही जाता है ना कि अभी आई एम लूजिंग माई सेल्फ, पता चल ही जाता है, तो तभी Yes, अपने yes. आप को अवेयरनेस में आ गई मैं कि ये हो रहा है, चलो मैं अब हट जाऊं, लेट मी डू माई क्लीनिंग। आप तुरंत आपकी तुरंत वो शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस आप तुरंत फील करेंगे कि नाउ आई एम मच मोर काम। जो मेरे इस अंदर जो स्थिति चल रही थी, इतना उथल पुथल चल रहा था कि अब मुझे क्या करना है वही नहीं समझ में आ रहा, तो तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाए, वो अवेयरनेस में रहना है, डिस्कनेक्ट हो जाना है, खुली आंख से भी क्लीनिंग कर लो, क्योंकि कभी कभी हम उस सिचुएशन बाहर निकल भी नहीं सकते, किसी कैबिन में बैठे हैं, कहीं पे हैं, तुरंत कर दो और तुरंत आपको वो, यू विल फील सो लाइट, एंड देन यू कैन टेक योर डिसीजंस व्हाटएवर यू नीड टू डू एट दैट मोमेंट। Yeah. थैंक्स फॉर द क्वेश्चन नेहल मैम, क्योंकि कई बार हम बहुतों बार इस सिचुएशन में गुजरते हैं। और क्या हम इसको मोर देन वन टाइम रिपीट कर सकते हैं दिन में? यस यस, दिस ये जो इमरजेंसी क्लीनिंग है ना, उसको हम 2 से 3 बार कितनी बार भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा खराब दिन आ जाता है अपने पास कि वो हमें कर लेने का, तो कभी गिर गया, कभी टोमेटो सॉस गिर गया, कभी दाल गिर गई, तो साफ तो करना पड़ेगा ना, तो तुरंत तुरंत साफ कर दो, तो एटलीस्ट तभी तो आप लाइट बन हो गए और वो जो इम्प्रेशन लगी वो तुरंत क्लीन हो जाएगी। अगर वो इम्प्रेशन को और गहराते जाएंगे, यानी क्या होगा, मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं पूरे दिन उसी के बारे में सोचती रहूंगी, अरे इसने साथ मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये क्या हो गया, and I'll keep on thinking. The more I keep on thinking, the more I make that sanskar more hardened, Stronger, yeah. stronger, Stronger, yeah. and the more वैसा ही रिएक्शन मेरा नेक्स्ट टाइम होने वाला है। मैं वो पैटर्न को हमें तोड़ना है, तो इसीलिए ये क्लीनिंग की पद्धति इतनी इम्पोर्टेंट है, उस पैटर्न को तोड़ना है। एंड दिस इज द मोस्ट अनदर, कल हमने चीज देखी, योगिक ट्रांसमिशन इज द मोस्ट यूनिक पार्ट ऑफ आवर हार्टफुलनेस मेडिटेशन, क्लीनिंग इज द नेक्स्ट मोस्ट यूनिक थिंग इन आवर प्रैक्टिस, जहाँ पे डेली हम अपने आप को लाइट 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 करते जाते हैं, मोर एंड मोर हमारी परसेप्शन क्लियर, वो जो लैम्प है ना, वो पूरा लैम्प क्लियर 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 होते जाता है, हमको पता चलता है कि आगे मेरा क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, वो क्लैरिटी, वो कॉन्फिडेंस, वो पूरा आने लगता है, बशर्ते मैं वो प्रैक्टिस सही तरीके से रेगुलरली कर रही हूँ, हार्टफुलनेस प्रैक्टिस।
So, if there are no questions, I think we can end the session. Yes, yes. So tomorrow we have another technique that we would be learning is to get connected with the self. ओके एंड हाउ डू वी डू दैट सो जो मैंने डिटॉक्स टेक्निक्स आपको बताए हैं वो यूट्यूब में आप डालेंगे हार्टफुलनेस एंगर डिटॉक्स स्ट्रेस डिटॉक्स एंग्जाइटी सब कुछ आपको यूट्यूब में मिल जाएगा there is a treasure, a whole lot of treasure on YouTube about heartfulness, about so many questions, queries you may be having. Please go and explore. So, should I start the slides? We have two more slides. Yeah, Anything yeah, left with right, that? right. Please, Yeah. everyone, please stay with us. I would like to share. We have these two books, all of you. Designing Destiny and The Heartfulness Way have been the best sellers, Amazon bestsellers, where you will have so much clarity about our technique, about heartfulness practices, why, how, and when. Everything will be so एक simple language में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है, बहुत एग्जाम्पल्स दी गई हैं जो हमारे लाइफ में घटित होता है, वही सब एग्जाम्पल्स दी गई हैं. सो बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्या कहेंगे मैग्नेटाइजिंग बुक्स हैं ये, जो आप शुरू करोगे तो ऐसा लगेगा आगे क्या है आगे क्या है, और ख़त्म करने की इच्छा इतनी रहती है कि मैं इस बुक को फिनिश करूं. एंड द मोर यू नेक्स्ट टाइम वापस जैसे पढ़ोगे आप कुछ और ट्रेजर मिलने लगेगा. सो ऑलवेज whenever you reread the book you will find new treasures from the book. Okay, it's a wonderful guidance, these two books, and I would request for you to purchase it from Amazon. They are not very expensive also, and they could be our treasure in our. And I think Kindle editions are also available. Kindle Yes, ma'am. edition. Yes, Kindle editions are also available. And these are also available in Hindi as well as in Gujarati. Many languages, many Indian languages and foreign languages. You can order your own language. बहुत सारे languages में ये translate हो चुके हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पूरा एक्सप्लेन किया गया है. तो आप बहुत एंजॉय भी करेंगे और बहुत सीखने को भी मिलेगा जिस चीज़ को हम इस एक्सपीरियंस करेंगे सभी. Thank you so much, everyone, for being there with us, participating today. And let us meet again tomorrow, all of us. And आपसे again request करूँगी मैं कि सुबह में कल meditation ज़रूर करें और कल इवनिंग में आप क्लीनिंग करेंगे. क्लीनिंग का वीडियोस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. And you can do the cleaning even today evening, but आज कर लिया है अभी तो it's not needed again. So we meet again tomorrow. Thank you, everybody. Good See you night. all tomorrow. Tomorrow would be our last day, and this recording is already available on the YouTube. You can rewatch it and reshare it. Thank you, everybody. Have a Thank you. nice time. Good night. Thank you. Bye-bye.